I'm live. I'm live. Okay. So we are going to learn about this pattern of system design. We have multiple pattern, right? Real-time update, dealing with contention, multi-step processes, scaling read, scaling write, and assembly large blob and managing long-running jobs. Okay. Let's start with managing long-running tasks or job. You can say managing long-running tasks pattern. Split API. Focus on the two phases. Date acknowledgement and background processing when users submit heavy tasks like a video encoding. The web server instantly validates the request, pushes a job to a queue, and return a job ID, all within millisecond. Meanwhile, separate worker process continuously pull the required job, execute the actual time. Job is ready. Wait, managing long-running tasks pattern splits API into two phases. Okay, immediate acknowledgement, ठीक है, immediate acknowledgement, and background process. So, ठीक है, when users submit heavy tasks like video encoding, the web server instantly validates the request, pushes a job to a queue, ready on a button, queue, ठीक है, and return a job ID, all within millisecond. Meanwhile, separate worker processes continuously poll the queue, grab pending jobs, execute the actual time-consuming work, and update the job status in the database. In two phases. Okay. Uh, so what that means is whenever you submit like a video encoding or some sort of a job, how it works is like the first phase, all the like initial processing happens like create a job ID and something like that, and it pushes to a database uh, via some API or something, and in the background it's keep on like encoding it, and as soon as it get encoded, it updates this job status and all in the database. Problem. Let's start with the problem. Imagine you run a simple website where user can view their profile. When a user loads their profile page, your server makes a quick database query to fetch their data. The whole process querying the database. The whole process querying the database. Let's start with the problem. Imagine you run a simple website where user can view their profile. When a user loads their profile page, your server makes a quick database query to fetch their data. The whole process querying the database format the response. Finally, क्या कर पहले let's have the water first.
Bring alert system. Microphone is in unmuted, but has no signal. What do you mean by that? What has no signal? No problem. Let's start with a problem. Imagine you run a simple website where user can view their profile. Okay. When a user load their profile page, your server make a quick database query to fetch their data. Makes sense. The whole process, querying the database, formatting the response, sending it back, take it take less than 100 milliseconds. Makes sense, okay? The user clicks and almost instantly see the information. Life is good. Definitely the life. So what is okay? No, that's half of the that was not the problem actually. That was with the information. Now imagine that instead of just fetching data, we need to generate a PDF report of the user annual activity. This involves querying multiple table, aggregating data across millions of the rows, rendering charts, and producing a formatted document. The whole process takes at least 45 seconds. All right. Whole process takes at least 40. ठीक है. Synchronous process of expensive task. Waiting 45 seconds, no, that is not good. So, can request something over the HTTP network and it goes to the server and it is fetching, doing something, aggregating data, querying multiple DB and then putting everything in a single request and then sending it back. It will take time. It will be time consuming with a synchronous process. If you go for wait, with synchronous processing, the user's browser sit waiting for 45 seconds. Most web servers and load balancer enforce a time limit around 30 to 60 seconds. So the request might not even complete. Oh, I wasn't aware of that. Most web server and load balancer enforce timeout limit. So a request cannot exist more than 60 seconds. Oh, even if it does, the user experience is poor. There's there is starting at a loading indicator with no feedback and about process. हाँ ये तो है कि अगर कोई if there is no loading indicator and all waiting for the 45 seconds feels like a stuck like we are stuck at some point and it is even working or not. The PDF report isn't the PDF report isn't unique. Video uploads, for example, require transcoding that takes several minutes. Profiles, transfer takes several minutes. Profile photo uploads need resizing, cropping, and generating multiple thumbnail size. Bulk operation like sending newsletter to thousands of users or importing a large CSV file take even longer. Each of these operations far exceeds what user will reasonably wait for. Okay, what that means is like whenever when you are working with a PDF and you do some changes and like in a YouTube, whenever you upload a video, uh, there is a bulk processing happens behind the scene. So it takes time. For example, like whenever you upload a video, it do cropping, resizing, and generate multiple sort of a thumbnail. So it takes time from the video itself. So it's sort of a bulk operation, uh, like sending newsletter to thousands of the user. Right? Even if you could scale infinitely, synchronous process provide terrible user feedback. The user click generate report and then nothing. Is it working? Did it fail? Should they refresh? After 30 seconds of waiting, many users assume something broke and try again, creating duplicate work. That way the problem works. Okay, as we discussed earlier, uh, like uh, like in synchronous process, if user sends some request and nothing happens for like 30 and 40 seconds, the user will think it is broken. This is not even working, and he or she might send another request, or they may refresh the page. That can make this request even worse, process even worse. Like now we have to do the same thing twice. That will take twice the time, or maybe
or maybe bring something out of it. Alright. So synchronous a process clearly has its limit. When operation takes more than few seconds, what's the alternative? What? So, hmm, the solution. Instead of making the user wait while we generate their PDF, we split the operation in two parts. When they click generate report, we immediately store their request in a queue and return our response. We are generating your PDF, your report. We will notify you when it's ready. This takes milliseconds, not a minute. Yep. Okay. So the solution is like whenever you user send a request or click on like generate PDF or some bulky operation, we are going to split them in two operations or two parts. First part immediately going to save in the database like we are working on this request, the status is working or maybe pending, and send this acknowledgement to the user like yeah, we are working on your report. It will be available shortly. Okay? And in the background, uh, worker will pick up the task from the queue and they will start processing it. The user experience get better because he do not have to wait for like 30 and 40 seconds to get the response. As soon as he get the response, he think, "Ha, it is working. No worries. It will take some time, but he knows it will take some time." The server job is now super simple. It just validate the request and add it to the queue and return a job ID. The actual PDF generation happens somewhere else entirely. Okay, so one of my server is just going to respond to the client immediately, like what is the status of this job, and it will add it to the DB. That's it. And the next server that we have that will use the job queue and the worker to update that job, or you can say work on that job. The actual PDF generation happens somewhere else entirely. Okay, we call it this is we call this the managing long running task pattern. The core idea is to decouple request acceptance from request processing. Your web server become lightweight. Request. Let us see this. Uh, Check out this diagram first. Client did some request. Server respond immediately. Put the job on queue. Add job to DB. Okay. Job queue. Worker update job status. ठीक है. Worker pull job of the queue and create a report asynchronously. We call this managing a long-running task pattern. The core idea is to decouple request acceptance from request processing. Your web server become lightweight request router that quickly acknowledge worker and hands it off. A separate pool of the worker process handles the actual heavy lifting. This worker will pull a job from a shard queue. This worker pulls the job from the shard queue, process them at their own pace, and update the job status when completed. The async part means the original HTTP request completed immediately without waiting for the work to finish. The worker pool part refers to the collection of process dedicated to execute this background job. Okay, so what does means is like
the client will get an immediate response and the HTTP work is done here. Or maybe the, what should I say? The, the user got acknowledgement like his work is happening in the background, and we got a separate worker to work on the request itself. The queue acts as a buffer between your web server and worker. It is stored jobs durably so nothing get lost. If a worker crashes, popular choice for queues include Redis. Okay. The queue acts as a buffer between your web server and worker. It stores the job durably so nothing get lost. If a worker crashes, popular choice for queues include Redis. The queue act as a buffer between your web server and workers. Web server and workers. It stores job durably so nothing get lost. If worker crashes, popular choice for queue include Redis with a pull or a pull MQ. AWS SQS Rabbit MQ or Kafka for a high scale. The queue also give you visibility into how many jobs are waiting, how long they are taking, and whether any have failed or not. The queue acts as a buffer. The queue acts as a buffer between your web server and worker. It stores job durably, so nothing gets lost. If a worker crashes, popular choice for queues include Redis with Bull or Bull MQ, AWS, SQS Rabbit MQ Craft. The queue also gives you visibility into how many jobs are waiting, how long they are taking, and whether many have failed. Wait a second. So you know how long they are taking, and whether any have failed. How do we know if whether they are failed or not? Because in a job queue, it is going to just save the data, right? No, no, no. Wait. Does the worker GPU also update in this job queue? This separation solves the scaling problem we saw earlier. Web will no longer need expensive GPU just because some request trigger video processing. You can run web server on a small cheap instance while your video worker use GPU optimization machine. When PDF generation backup during month end, reporting errors spin up extra worker without touching your web server fleet. Each component scale based on their specific need. Server 1, instance 1, the cheap CPU job queue worker using this GPU. ठीक है. The user experience improved dramatically too. Instead of starting at a frozen browser, user get immediate confirmation that their request was received. They can check back later to see their position in the queue or processing flow. Uh, when the job completes,
You notify them via email, push notification, or WebSocket update. They are free to navigate away, close their laptop, and come back when the work is actually done. Okay. So, but basically, what does mean is like, once the user send the request, like, I want to do this, I want to convert this PDF, or I'm uploading this video, I'm not uploading this video, leave that out. Like, he want to pull some analytics tool, analytics data, so he can request it, and the server can immediately acknowledge him, like, we are working on it. We will provide you data shortly via email, WhatsApp, or whatever you have, right? And you can just close this browser or close your laptop, whatever you want to do, and you can just go ahead with your life, and we will just respond you the data that respond you, that after processing or something like that. Like they are free to navigate away, close their laptop, and this pattern applies broadly to any operation that takes more than few seconds. More processing, video transferring, bulk data import, third party API call with restrict rate limits, report generation, email campaign, uh, they can all benefit from a Spring operation processing. The specific tooling technology and worker implementation might vary, but the core pattern remains the same, except processing quickly process signals, notify when complete.
Okay, okay, okay. User experience input automatically to this pattern applies broadly to any operation that takes more than few seconds. Imagine processing video transporting bulk data import to third-party API calls with strict rate limits, report generation, email campaigns. They can all benefit from async processing. The specific queue technology and worker implementation might vary, but the core pattern remains the same, except quickly processing frequency, notify and completes. Pattern applies broadly to, this pattern applies broadly to any operation that takes more than a few seconds. Imagine processing to transfer data into third party. They call with the strict rate limits. Food generation, email campaign, they can all benefit from async processing. The specific queuing technology and worker implementation might vary, but the core pattern remains the same except quickly and process as soon as notified and complete. The pattern applies from a few seconds email processing, video transferring, bulk data import, third party API call with a strict rate limit, third party API call with a strict rate limit, report generation. They, they can all benefit from async. The specific queue technology and work implementation might vary, but the core pattern remains the same, except quickly process notified. Okay, so what that means is like the pattern that we are currently studying, the managing long running task, can be applied in like multiple places. For example, image processing, video processing, bulk data exports, or maybe third party API call with strict limits, report generation, email campaign. All of them can be benefit from this pattern. Okay, so the specific technology or the implementation might vary little, but the core pattern is going to be the same. Accept quick and accept quick and respond quick, and then do the work in the background. Have your task in the background, and then responded thing. Ha, we have done this work. Trade off. Managing long range tasks isn't magic. This approach solves problem, but it creates other. Here's what you are getting into. What again? Fast user response time. हाँ ठीक है. User will API call written in milliseconds instead of timing out after 30 seconds. User get immediate acknowledgement that their request was received. Independent scaling. Web server and also worker scale separately. Add more worker during peak processing time without paying for idle web server and web server and worker scale separately. हाँ ठीक है. And we have the independent scaling like we can create multiple server for this. Like if we are getting multiple requests, and we can have multiple worker server as well, that is going to like do the main job, the heavy lifting. We can scale them independently. We do not need to depend on each other. Fault isolation. A worker crashes processing one video doesn't bring down your entire API. Failed job can be retried without affecting user facing service. Okay. So we will also get this fault isolation. What that what does that mean is like your one worker is working on some part, right, or some video or some task, and if it fails, if it goes down, if it goes down, it is not going to affect another task or another worker that is working on. The task can be picked by other worker as well, so nothing is going to lose. Better resource utilization. CPU intensive work run on computer optimized instance. Memory heavy task at high memory machine. Web server used cheap general purpose instance. Okay, so again the same thing. Like where we are only processing the request itself. That is that will that won't take. Wait. Wow, my English is gone. My English is definitely gone.
Okay, the server that processes normal requests will require less memory, less CPU power, and overall less power, right? So we can use some. We can have a cheap CPU. Not we shouldn't say cheap. We can say we do not require much power on that server. Instead, we can improve, or we can give more power, more GPU, more memory to this worker server that is actually going to process the work. What you lose? System complexity. You now have queue, worker, and job status tracking to manage more moving parts, mean more things that can break. Yep, the complexity is going to increase. The headache is going to increase. Like there are more places things can break. Eventual consistency. The worker isn't done when the API returns. User might say stale data until background process completes. Yeah, of course, that's the point, right? I mean, the eventual consistency is going to happen. Like if we are doing async work, job status. You need infrastructure to store job status, handle retries, and expose a status endpoint. This add database load and API complexity. Yeah, of course. We need something for tracking. Like we have to create one API for tracking the like how much data is completed and all. Monitor overhead. Queue depth worker help job failure rate processing latency. You are monitoring a distributed system instead of simple request response cycle. Now the same as a system complexity. We now need to manage the queue worker and if a job is failing or not, why it's failing, what is the failure rate, what's the latency that we are having in all the distributed system. Plus, async pattern creates new failure model. What happens when the queue fills up? How do you handle poison message that crashes worker repeatedly? When do you give up retrying a failed job? These problems aren't impossible to solve, but they need planning as synchronous system don't. So here we will face some problem like a poison job. Poison job, what that means is like that job that can kill our server, that can bring our server down, down. How will we manage that? And how can we manage like some job was continuously failing? How do we manage that as well? Or what happen if our queues get full? Like we have no more data. I mean, we have no more space to store the data. How are we going to handle that? How to implement? At its core, two technologies are required to pull this off. Messaging queue, pool of worker. Of course, messaging queue is going to store all the data that is not that is going to be processed by the worker, and worker are this pool of worker are the cluster of server that is going to process this request that is present in this queue. A message queue is a system that allow you to send and receive messages between different part of your system. It's a way to decouple the sender and receiver of a message, allowing them to operate independently. Pool of workers. A pool of workers is a group of processes that are dedicated to processing messages from a queue. They are responsible for pulling messages from the queue and process them and updating job status. Let me ask ChatGPT like, how do we handle retries? Retries not if a server. Okay, we have queue and worker one uh with queue and how will the system knows that work is done or not or in pending state? We
This is a classic distributor. So we have a queue worker pool. Now, all the tasks completed is depending should we resend it? Good idea. There are two main patterns I use in the system. Knowledge-based queue most common. When a worker pull a job is marked as in flight. Worker processes it. If success, worker send acknowledgement. Queue did the job. Okay, makes sense. So queue will hold the data till the processing is complete. If that processing is complete, then the data from the queue is going to be deleted. Of course, if worker dies, no acknowledgement is queue automatically requeue the job after timeout. Visibility timeout. When a worker pulls a message becomes invisible for a second. If worker finishes an acknowledgement, message deleted. If worker dies, no acknowledgement, timeout expire. Message become visible again. Another worker picks it up. So system doesn't need to know explicitly. Okay, third is status stored in DB. A strong control. Sometimes we also maintain a DB table. We got task mark the processing after completing status complete. If worker dies, hard to stop another service scan if a status got the processing and updated at its old mark it as a failing retry. Okay. Heartbeat mechanism for long tasks. Workers under heartbeat every few seconds. If heartbeat is missing, system marks the worker dead, resigning task. Then tasks may be retried, it might run twice, so tasks must be independent, meaning running multiple times gives same result. Example, bad, add 100 to the balance. Set balance 2000 if transaction ID is not already put. Interview ready answer, short button. If interview asks what worker dies after pulling job, how do you ensure alignment? We use acknowledge-based processing with visibility timeout. When worker pulls a job, it becomes in flight. If worker completes successfully, it's an acknowledgement and job is removed. If worker crashes before acknowledgement, the visibility timeout expires and the job becomes available for other workers. Additionally, we maintain dependency to avoid duplicate processing. Real production pattern best practice. Queue with visibility timeout, acknowledgement mechanism, add opponent task, heartbeat monitoring, retry movement plus del letter queue. Mother SQS del letter queue. If tasks fail 5 times, move to DLQ. When worker dies, system knows system knows job by status. System knows job status by missing acknowledgement, visibility timeout, missing heartbeat, previous status timeout check. Then job is retried or moved to DLQ. Ah, why is that? There's a lot to read on this page. Okay. Damn.
It crashes you. You can't lose all the pending jobs. You also need to handle concurrent access from multiple workers with no duplicate.
Huh. This provides storage, while full as job queues semantic on top automatically tracks play job priority queue. It's simple to set up and just work for 90% of the use case. Where it is offer
Still memory first, so you can lose job. ना। लाडले आ गया। अरे भाई, क्या कर रहा है? मैं तो अप्लाई 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 क्या चलता कर रहा था? है। और क्या। मैं रात को अप्लाई करूंगा भाई, रात को बैठ के 12 के बाद आराम से। अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ये फोकस नींद कर। से आ रही थी, मैं कहा यार यही कर लो पहले। अब उठ गया। ऐसा सिंपल सेट आउट टू क्या पढ़ रहे हैं? भाई, तेरा हेलो इंटरव्यू। पढ़ता रहे। हम्म, हम्म, हम्म। पढ़ा रहा भाई। हैंडल स्केल गारंटी में paper message. Oh, you paper message, which is great at low volume but can be expensive at scale. The one and this size limit means you are typically still a store job details and parts. हाँ तो घंटे भर से लाइव है, मैंने जब देखा था तब नहीं था, मैंने कहा पता नहीं आया ही नहीं। उठा मैं आज बहुत देर सोया, मेरा मन ही नहीं था उठने का। मैं पड़ा हुआ था, मैं 2-3 बार उठा सो गया, उठा सो गया, उठा सो गया। मैं उठ ही आते हैं, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। मैं डेढ़ डेढ़ 2 बजे देखा होगा। आज मैं 1:30 बजे तो उठा ही था शायद। मेरा उठने का बिल्कुल मन था, फिर नींद खत्म हो गई। हो रहा था कि अब नहीं लेटा जा रहा, उठ ही आता हूँ मैं। नींद तो मेरी 8 बजे खत्म हो गई थी, जैसे वही था कि सो जाओ, नहीं उठना मुझे। अब माइक्रोसॉफ्ट में मैं देख रहा हूँ इतनी ओपनिंग आ रही है HD1 की, ये ले क्यों नहीं रहे साले। कॉल नहीं आ रहा। इतनी ओपनिंग हर दिन आती है, हर दिन एक आ जाती है। तो टेस्ट और वो क्यों नहीं आ रहा फिर। रेज्यूमे चेंज कराओ क्या थोड़ा। मैं भी सोच रहा हूँ चेंज किया यार, चीजें अपडेट करी जाए, सोच रहा हूँ थोड़ा डाला जाए कुछ और भी। ऑपरेशन बट इज रियल, यू नीड टू मैनेज क्लस्टर हैंडल अपग्रेड एंड रैविड एमक्यू मोस्टली तुम अपने सर्वर में चलाते हो। तो अगर AWS SQS जाते हो तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ बाय इन लाइक Amazon हैंडल करता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं क्या इसमें, चीज। AWS SQS तेरा क्यू भाई, क्यू अरे क्यू वो मुझे पता है, पर हम्म क्या चीज, मतलब इससे पहले क्या बोला तूने, क्या यूज करता है खुद रैविड को। MQ तेरा तुझे सेल्फ डिप्लॉय करना पड़ेगा अपने अच्छा, सर्वर पे। रैबिट MQ बोल रहा है, मेरे को पता नहीं क्या रैविड बोल दिया। MQ ये सब तो पता है भाई। AWS के मैनेज क्यू सर्विस होती है उनकी। पूरा Amazon ही हैंडल कर देता है, लेकिन एक्सपेंसिव हो जाएगी ये तेरा। तो इसलिए लोग इसमें क्या करते हैं, जॉब जॉब आईडी डालते हैं। ले बेटा, तू जॉब आईडी रख बस, और कुछ मत रख, तू जॉब आईडी रख। काम का इज गुड, इज गुड भाई। काम का तो भाई, स्पेशली वेरी यू स्टैक ऑलरेडी यूज इवेंट शिपिंग। If it only lets you repay message fan out to multiple consumer and keep it around for longer retention window, while it still handling huge volume with strict ordering guarantee within a partition. If you don't already have a favorite, Kafka is the most commonly used in interview. पुल की तो मैंने, अच्छा पुल की तरह रेडिस ही बोलते हैं क्या? वर्कर worker pull job from the queue and execute them. The key decision is how to run these worker. Normal server are the simplest approach. You run 10-20 worker processes on a few machines, each pulling job in a loop. This gives you full control over the environment and choose
ये मेरी लाइफ दिखी थी क्या? पहले नहीं दिखी थी ना, तब तो लाइव आया नहीं होगा जब मैंने शुरू में देखा था। नहीं मतलब नोटिफिकेशन आया था, कैसा दिखा? ये नहीं, मैं तो जाके ही देखा था। तू जाके चैनल देखा कि भाई क्या कर रहा है ये? ठीक है भाई। और क्या। भाई भाई लिंक पड़ा हुआ था ना मेरा व्हाट्सएप पे, मैंने वही क्लिक कर दिया था सीधा। वीसी में तो है, वीसी में तो आ जाता है कि भाई कोई बैठा हुआ है। पता नहीं। क्या डिस्कॉर्ड चल रही है? हाँ, वो भी होगा। नोटिफिकेशन बंद है ना मेरे सारे। मेरे फोन पे आता है यहाँ से, बंदे मेरा भी। फोन पे तो मेरा लॉगिन ही नहीं है। चार्जिंग पे लगा। हाँ। जॉब भाई मेरे इंग्लिश इंग्लिश कोई चुक चुकी है ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो हाउ बट बहुत गंदी बोलता है भाई। नहीं इम्प्रूव हुई थी भाई, अब अचानक लग रहा है यार आई एम गेटिंग बैड। सही में गंदी बोलता है भाई। हाँ पता है भाई, अभी अभी हाँ मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि सडनली बहुत खराब हो गई है। आउट ऑफ अ सडन आई डोंट नो हाउ, आउट ऑफ पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जस्ट लाइक गेम में होता है ना कि भाई मैं कभी वैल्यू की बात कर ले, एकदम मार रहा था मार रहा था मार रहा था एंड और सडनली फिर मेरा एम एम लगना बंद हो जाता है, सेम वही फीलिंग आती है मुझे हर जगह पे। What the hell is going on with me? So rather simple approach. You run 10 20 worker on a few machines, each pulling job in a loop. This gives you full control over the environment and make debugging straightforward. Since you can't SSH into the box and inspect what's happening, क्यों? Approach. You run 10 20 worker processors on a few machines, each pulling job in a loop. This gives you full control over the environment and make debugging straightforward. अच्छा since you can लिखा हुआ भाई, मैं सोचूं मैं ऐसा ऐसा सच। सबटाइटल एरर। हाँ भाई पढ़ने क्या को कांड पढ़ लिया बताओ। SSH into the box and inspect what's happening. Long range job aren't a problem when you control the infrastructure. Of course, when you control the infrastructure, the downside is you are managing servers and paying for idle capacity during quiet period. मैं तुझे सर्वर लगा रखा है, तुझे कितना ही खर्च आएगा, तेरा खुद का सर्वर है सब कुछ, तो बहुत ज्यादा खर्च आएगा क्या फिर भी मेंटेन करने तेरे में उनको। सर्वर के उसके ऊपर है भाई कि तूने कौन सी मशीन लगाई है। T2 माइक्रो लगा रखा है तो कुछ नहीं आता। EC2 पे चलता है ना, फिर वो EC2 की प्राइसिंग आ जाती है तुझे। AWS का अगर सर्वर मैनेज करना है तो। अच्छा EC2 तो तेरा बढ़िया भी है ना कि अपने आप स्केल अप स्केल डाउन मार देगा बहन चो, कि जा भाई नीचे जा वो कुछ तो काम तुझे नहीं हो रहा ऑटो तो। स्केलिंग ऑन करनी पड़ेगी ना उसकी। हाँ वो तो तो अलग हो गया ना, तुझे एक अगर ऑन डिमांड की तेरी एक प्राइसिंग होती है, वो तुझे तो देनी पड़ती है ना। मतलब अगर मैं इस पे जा रहा हूँ, AWS पे जा रहा हूँ, EC2 पे जा रहा हूँ, तो मैं ऑटो स्केलिंग तो लेके जाऊंगा ना, वही तो एक मेन पॉइंट है। अदरवाइज दो चार सर्वर रखने तो मैं खुद ही रख लूंगा भाई, कि दो रखने ले पड़ा हुआ है। ये भी बात है। वही है भाई, तेरी सब प्राइसिंग के ऊपर है, क्योंकि देख, ये तेरी T2 T3, अरे माइक्रो माइक्रो तो बहुत छोटी होती है, इनमें तो कुछ भी मतलब नाम का खर्चा होता है। 10 15 20 डॉलर पर उतने में तेरा कुछ काम होता नहीं, क्योंकि इसमें जहाँ तक है आधा 1 GB मेमोरी होती है, एक या दो CPU होते हैं। और तेरी वॉल्यूम स्टोरेज की तरह पे होगी नहीं, इस तरह पे सिर्फ EBS स्टोरेज होती है, इंस्टेंस वाली। हम्म। फिर तुझे अपग्रेड करना ही पड़ता है, तो फिर जाता है बड़े वाले इंस्टेंस पे, तब लोड़े लगते हैं भाई। तो ये तो करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब तेरे पास काम अच्छा आ रहा है, पैसे भी होंगे। नहीं, तेरे को हाँ, मतलब थोड़े बहुत यूजर के लिए भी करना पड़ जाता है भाई, माइक्रो पे कुछ चलता नहीं है ये। और फिर वो है ना, तेरे को एक बंदा बिठाना पड़ेगा तेरे पे। सर्वर डाउन हो तो तेरी सारी सर्विस डाउन हुई, तेरा यूजर का हम्म। एक्सपीरियंस खराब होता है। तो सर्वर डाउन में तो बहुत बहुत नाटक होता है भाई। तुझे बिठाना पड़ेगा बंदा कि हाँ, ये बंदा देखेगा, अप टाइम देखेगा पूरे टाइम। सर्वरलेस फंक्शन तेरा लैम्डा क्लाउड फंक्शन, तेरा सर्वरलेस फंक्शन तेरा EC2 ही हो गया ना। पागल है क्या, EC2 तेरी मशीन होती है। अरे तो EC2 जिस पे रन होता है क्या सर्वरलेस फंक्शन फिर क्या होता है?
सर्वरलेस क्या होता है सर्वरलेस फिर? फंक्शन लैम्डा होता है तेरा। लैम्डा तेरा होता है कि तू बस उसमें कोड लिखता है पाइथन का या जो भी तेरा जावास्क्रिप्ट का, और रन पे क्लिक कर देता है। तो EC2 VC2 कुछ मैनेज नहीं करना, वो अपने आप कोई मशीन प्रोविजन करता है अपने बैकएंड पे और अपने आप चला कर दे देता है। उसमें तेरा कोल्ड स्टार्ट का इशू आता है, पता नहीं, वो तो कम ही होता है वैसे। 20 मतलब माइक्रो मिली सेकेंड का होता है कि जितनी देर में वो मशीन अपने एंड पे स्पिन अप करता है AWS। फिर वो तेरा जो तूने रिक्वेस्ट मतलब कोड चलाया है वो चलने लग जाता है। पर उसमें फिर वो दिक्कत आती है कि वो कभी भी प्रोविजन जो मतलब तेरा एक बार कोड चल गया उसके बाद वो कभी भी प्रोविजन जो करा हुआ है उसने सर्वर वो बंद हो सकता है। और तुझे दोबारा रिक्वेस्ट तूने भेजी तो फिर से वो कोल्ड स्टार्ट का इशू आएगा, तेरे को थोड़ा डिले मिल सकता है रिक्वेस्ट में। हाँ ये तो है, ये तो मैंने पढ़ा। ऐसा नहीं है कि बार पूरा टाइम चलता रहेगा, वो ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो ऐसी रैंडमली असाइन कर देता है कि इस वाली मशीन को दे रहा हूँ, पर अगर किसी और बंदे ने कहा कि मुझे खरीदनी है तो वो उसको दे देता है जाके कि ये ले, प्रोविजन कर दी तेरे को। फिर तेरे लिए वो नहीं ढूंढता है। Spike your workload where you might process thousand इसके jobs. लिए भी कुछ करते हैं, वो करके रखते हैं, लैम्डा को गर्म करके रखते हैं पहले से। रैंडम गरम। होता है ऐसा। भाई गरम करके रखने के लिए उसको बीच में रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती रही होगी फिर तो, कि भाई ले मतलब रिक्वेस्ट। एक तुम स्टार्टिंग रिक्वेस्ट पहले भेज देते हो ना, और फिर ऐसा करते हो साइकिल में, जैसे तुमने 5 लैम्डा चला के रखे। हाँ पहली बीच में रिक्वेस्ट भेजते पहले को रहो। भेज, सबको एक एक करके भेज दी, और फिर छठी वाली रिक्वेस्ट पहले को भेज दी, ऐसे हाँ यार। राउंड रॉबिन फैशन में भेजते जाते हो। तो ये तो ऑलमोस्ट पूरा पर्पस डिफीट नहीं कर दिया भाई कि ये तो अब चालू ही है मशीन, तो खर्चा ज्यादा नहीं आएगा? नहीं, सर्वरलेस में नहीं आता भाई। फिर तुम्हारा वो हो गया ना, रिक्वेस्ट हैंडल होने के बाद खत्म हो गई, तो अब बात वही है ना, तुझे मैनेज नहीं करना पड़ रहा अपना सर्वर, तू ना 24 घंटे के पैसे देगा भाई। तू सिर्फ अपने कंप्यूट के पैसे दे रहा है, तूने 10 मिनट काम करा है तो उसके ही देगा ना। अच्छा तो बेसिकली व्हाट द पॉइंट है सर, कि तेरा EC एक टू बार का है स्टार्ट हो। तेरा, तो स्टार्ट हो गया तो हो गया तेरा, उस पर कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है उन्हें मतलब नहीं, वो तेरे घंटे के हिसाब से पैसा लेंगे। भाई जब घंटे के हिसाब से पैसा ले रहे हैं चालू होने के बाद, फिर तो नुकसान नहीं है? कि मान ले मैं हाँ, बार तो वो बार EC रिक्वेस्ट टू भेज का रहा है हूँ। ना। अच्छा EC2 का है, अच्छा। लैम्डा पे तेरा ऐसा है ना कि भाई, लैम्डा पे है कि तेरा 10 मिनट चला तो 10 मिनट के पैसे लेंगे। मतलब मैंने एक जो टेम्परेरी रिक्वेस्ट भेजी कोल्ड स्टार्ट करने के लिए, चल गई तो उसके पैसे गए। फिर जो चालू पड़ा हाँ। हुआ है उसके पैसे नहीं गए। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है भाई, ये बढ़िया है। बस उसमें फिर भी वो कभी कभी रहता है कि वो अपने आप हटा भी सकता है उसे। ज्यादातर इतना रहता है टाइम की नहीं हटता, पर उनकी मर्जी है। जैसे इमेजिन कोई हम कोई जॉब बना दी जो रैंडम टास्क पे, रैंडम नहीं, एक टाइम पीरियड में कुछ भेजा जा रहा है, ठीक है, ताकि सर्वर गर्म रहे। उन्होंने उसको कैश कर दिया, ले बेटे। ले रिस्पॉन्स का, चालू हो जाए सर्वर। कौन आया भाई, घंटी बजी। भाई, एक सेकंड। Orchestrated handle scaling and deployment. This approach is more complex than plain server, but gives you more flexibility than serverless. You can still handle long job while getting better resource utilization through automatic scaling. Here's how everything works. The server will date the request and create a job record in your database with status pending. The server pushes a message to the queue containing your job ID, not the full job record. इसका तो मैं हरकतें कर रहा हूँ भाई, सब पढ़ रखा है मैंने, AWS का टेस्ट नहीं दे रहा हूँ मैं सर्टिफिकेशन का। सही है, सही है। तो कैसा टेस्ट होने वाला है? MCQ होगा, क्या होगा? अरे MCQ ही होता है। मल्टीपल करेक्ट वाले भी होते हैं, सिंगल करेक्ट वाले भी होते हैं, पर स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब 4 5 6 लाइन का एक पैराग्राफ सा होता है। अब जैसे तूने पूछा ना ये कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसमें यही होगा कि एक बंदा है, उसे अपनी कंपनी में कुछ नॉन वो करना है, मतलब वैसा टास्क करना है जो थोड़े थोड़े टाइम पे ही करना है, उसे परमानेंट नहीं करना। फिर उसने ये सर्विस यूज़ करी बट उसका बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उसे कौन सी सर्विस, ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े से क्वेश्चन डाल देते लैम्डा भाई, लैम्डा पकड़। हैं। एक आता है कि S3 पे एक बंदे ने अपना सामान डाल दिया, उसने डीप ग्लेशियर वाले आर्काइव में डाल दिया था। फिर उसने दिन में एक बार रिट्रीव करा, उसकी AWS की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई। तो दिन में एक तो बार बताओ रिट्रीव क्यों आई। करा? ग्लेशियर डाल के दिन में एक बार कौन रिट्रीव करता है?
वही तो। और तो बेटे, ग्लेशियर में तुझे कहते हैं कि साल में तो एक बार रिट्रीव कर सकता है, तब उसकी कॉस्ट आती है कुछ बहुत वही ना, बहुत कम। वो तो तो आर्काइवल अगर डेटा के दिन लिए में होता एक है। बार करेगा गांड पड़ जाएगी उसकी एक बार तो। करता है, $16,000 के अराउंड उसने बताया था कि अगर आप दिन में एक बार करते हो, नॉर्मल से भी ज्यादा कॉस्ट, बहुत ज्यादा। और देता है कि ले बेटे अब निकाल। भाई ग्लेशियर तो तेरा उसके लिए होता है सर भाई कि हाँ तूने रख हाँ दिया तो डेटा, कभी जो तो आया तो देखेंगे। हाँ तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं और फिर कुछ कुछ कंफ्यूजिंग से आ जाते हैं। मतलब तो सबके बारे में पता होना चाहिए कौन सी क्या करती है सब। So return a job ID to the client immediately after full message from queue, fetch job details from database, worker update job status to processing, worker perform the actual work, worker stored result in S3 for file. तो हम हर जॉब की क्यू में हम सिर्फ आईडी डाल रहे हैं, हम कहीं पे वो नहीं डाल रहे कि भाई एक्चुअली में डेटा क्या है सेट ना। अभी तक मेरे दिमाग में ये था कि भाई हम डेटा भी डाल रहे होंगे इसके अंदर क्यू के अंदर। एसक्यूएस में तो समझ में आता है कि वो महंगा है, बाकी में तो ठीक है बहुत सही है। डेटाबेस में डालो तुम। तो रिजल्ट इन S3 और फाइल्स डेटाबेस और मेटाडेटा व्हाटएवर किसमें जाना हो। क्या बेटा जॉब से टू कंप्लीट। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता जॉब आईडी जॉब क्यू में रहती है भाई। Importantly, each component can fail independently and the system will still function. If the queue go down, the server still has a terminal and job piles up in a database. It's pending. When worker crashes, job stays in the queue and will until new worker come out. If the database has issues, worker can retry until it recovers. भाई यार ये तो खत्म हो गई कल। बढ़िया गेम थी भाई। हम्म। बढ़िया गेम थी। मैंने कुछ अपग्रेड ही नहीं किया ग्रेस का, उसके अपग्रेड के बिना ही खत्म कर दिया मैंने। मैं रूम ढूंढा था फिर, लेकिन अपग्रेड करना ही भूल गया। भूला क्या, मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो तक उस एरिया को पार नहीं कर गया मैं। ग्रेस को तो 1% का अपग्रेड नहीं किया। बिना अपग्रेड किए पार हो गया भाई। इजी गेम था भाई बहुत। पता नहीं भाई, मैं तो नहीं खेल पा रहा कुछ। To minimize latency, reduce origin, load and delivery to avoid servers. क्या? Mobile app certain lambda function must provide role startup loading. ये देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी बता रहा था ना। टेस्ट सैंपल क्वेश्चन देख रहा था, सेम यही क्वेश्चन आ गया। देख रहा है? दिखा रहा है क्या मोबाइल स्क्रीनशॉट? ऐप्स, मोबाइल ऐप्स ऑथेंटिकेशन लैम्डा फंक्शन must provide consistently low startup latency during sudden spikes in new user sign up. Which lambda capability should you enable? बता। To maintain predictable response time, क्या होगा?
टाइम कोड्स थे कॉन्फ़िगर हाई मेमोरी। पहला वाला तो बेकार है। लैम्डा फंक्शन का रन टाइम कोड चेंज करने से क्या चेंज होगा? कैन बी एन आंसर। कॉन्फ़िगर हाई मेमोरी से क्या फर्क पड़ता है जिसका रैंडम टाइम पे आ रहा है? हाई मेमोरी थोड़ा डालना पड़ेगा शायद। प्रोविजन कंकरेंसी। प्रोविजन कंकरेंसी ये बीएससी में से एक होगा भाई। सी भी नहीं, बी ही मार भाई मेरे हिसाब अब से। अभी तुझे से बताया है क्या होता है भाई, तू फिर गलत कह रहा है। क्या? क्या बोला था, लैम्डा क्या होता है? कोल्ड स्टार्ट होता है, स्टार्टअप हाँ में टाइम लगता है, उसे चाहिए हाँ लो लेटेंसी स्टार्टअप चाहिए। हाँ। तो तू लैम्डा फंक्शन का कोड को ऑप्टिमाइज क्या करेगा अगर तू स्टार्टअप ही लेट हो रहा है तेरा? अबे गलत क्लिक हो गया। बैकर लास्ट बैकर। वाला था भाई, प्रोविजन कॉन्करेंसी होता है। बैक जाता नहीं, प्रोविजन कंकरेंसी मुझे आइडिया था क्या होता है उसका मतलब। जाता ही नहीं बैक। मतलब मेन पर्पस बट भाई वो कॉन्फ्रेंट पता नहीं यार। बड़ा कंप्यूटिंग सर्विस ही होगा मोस्ट। क्या क्या क्या? सीडीएन, सीडीएन होता है भाई। हाँ। हाँ सीडीएन होता है। But an application runs on multiple EC2 instances and need to read and write objects in specific S3 bucket. Company कंपनी। requires least privilege access. Rotation, no longer credential store on instance. Appropriate way to grant. बता क्या हुआ? ग्रेट आई एम रोल विद कुछ टीम में से एक होना चाहिए भाई। रोल बना। बात तो सही है। ठीक करते हैं भाई, रोल बना रुक। रोल और यूजर में अंतर क्या है रो रुक? रोल ही बनते हैं, रोल तेरे वो हो जाते हैं, तू बार बार उन्हें वो कर सकता है, कुछ तो कर सकता है, वो चेंज वेंज का होता है। मतलब ये होता है कि एक सर्विस से तुम दूसरी सर्विस को अटैच करते हो एक रोल के थ्रू, पॉलिसी लगा के। अच्छा मतलब तेरा एक तूने एक रोल बना यूजर दिया होता तो है, तेरे लिए होता है। यूजर के अंदर तेरा रोल बनता होगा ना, तेरा रोल के अंदर होगा तो ये सर्विस ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर सकता है ये यूजर है ना। हाँ मतलब यूजर का हो गया, जैसे तू एक यूजर है, वो तेरे लिए स्पेसिफिक्स बनेंगे। पर एप्लीकेशन वाइज होता है कि दो सर्विसेज को करना है तो एक तो रोल बना के करता है। जहाँ तक मुझे याद है यही होता है। यू आर मैनेजिंग अ माई एसक्यूएल आरडीएस दैट इज होस्टेड इन वीपीसी। You need to grant access to users coming from corporate data center to community PC or direct connect. What is the appropriate rule? बता। हाँ इन्वेंट ट्रैफिक सीआईडीआर ब्लॉक क्या है ये? साइडर होता है वो। अलाउ आउटबाउंड ट्रैफिक ऑन टीसीपी पोर्ट। अच्छा है आउटबाउंड ट्रैफिक। ये तो नहीं था। अगर देखा जाए तो इनबाउंड ट्रैफिक टीसीपी तेरा डबल 306 पे डिप्लॉयड है ठीक है। तो इनबाउंड अच्छा डेटाबेस यहाँ पे डिप्लॉयड है, तुझे इनबाउंड आउटबाउंड दोनों चाहिए। तो सिंगल से काम कैसे चल जाएगा? You have to grant user coming from communicate with PC over a direct connection. मतलब हमें allow inbound traffic on TCP port। शोल्डर ब्लॉक ही होगा पहला। इनबाउंड करना होगा, आउटबाउंड अपने आप हो जाता है। तेरे जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो, एट सिक्योरिटी ग्रुप बोले ना उसने यहाँ पे, वो कर दिया अगर तेरा इसके बाहर वाली एक लेयर होती है वो नहीं होती, क्या कहते हैं, स्टेटफुल नहीं होती। इसमें होता है कि तूने अगर इनबाउंड बोला है तो उसी को आउटबाउंड अपने आप मान लेगा कि हाँ निकल सकता है इससे डेटा।
वरना तुझे दोनों डिफाइन करने पड़ते। ये कह रहे कि अगर आ रहा है तो जा भी सकता है, होना तो यही हाँ चाहिए। Among the following which provide the highest maximum provision, अल्ले तो मुझे भी नहीं पता। क्या ये क्या ये among the following ये याद रखना था क्या? मैं तो देख के छोड़ दिया था बस। यार ये एक टॉपिक तो खत्म हो। कितना बज रहा है अभी? अबे 4 बजने वाले हैं, फक भाई बहुत टाइम निकल गया भाई, एक एक पूरा खत्म नहीं हुआ। बता किस पे मार्क करूं, इनपुट आउटपुट? Among the following which provide the highest maximum provision IOPS and most कैसा load latency performance for transition workload। इनपुट आउटपुट से ज्यादा क्या ही कम होगा। इसमें अगर लेटेंसी आ रही तो बाकी में तो और लेटेंसी आएगी। अब वो पता इनपुट नहीं ना आउटपुट है आईओ या फिर इनपुट आउटपुट होता है कि नहीं। वही मैं भी सोच रहा था। मैं तो नाम पढ़ के छोड़ते थे एक बार कि हाँ ये होते हैं कुछ कुछ। क्या ये आईओ, ये नाम से ही पता था भाई, ठीक है। Some common signal to watch for that should trigger you thinking about money. When they mention a specific slow operation, the moment you hear video transcoding, image processing, PDF generation, sending bulk email or data export, that's your cue. The operation takes seconds to minutes, jump immediately to minute. Takes several minutes. So I've written a job ID right away and process it asynchronously. When the math doesn't work, such a if they say we process 1 million images per day and you know image processing take 10 seconds, you do the quick calculation out loud. That about 12 images per second, which means 120 seconds of processing time per second. Processing time per second. We can't render on saturated. गलत क्लिक हो गया भाई, क्या है? Okay, so है, कुछ भी क्लिक हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ रहा था, क्लिक हो गया। GPU recload same server handling login like one different operation need different hardware. GPU हो गया, also of course difference will and that's about this fail. Question like what is the server will be handle the test of it. I prefer to control asking worker if one crashes will your answer no, the skill is being put. You should be the will take too long. No way. No, so system design maturity. So user experience before they bring it up. लंबा है sure something ठीक है और frustrating job dependencies ये भी ठीक है confusion YouTube video video genetic thumbnail 7 ठीक हुए हैं भाई, 7 में तो मुश्किल है। 10 में से हाँ, 8 होने चाहिए थे। एक गलत क्लिक हो गया था ना। नहीं, वो मैंने गिन लिया अपने में, ठीक में। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भाई। for genetic multiple size applying filter and
checking fan or cloud. Like, when someone million of follow ride sharing match asynchronously, the user sees finding driver market availability, calculating optimal route, and determine pricing, travel location update. Also, asking worker to update rider app without overloading them immediately. Respectively. All basic card authorization are simple. Nothing worker. Fraud detection, 3D secure verification. With delayed some reason, where returns are pending. Good statement. समझ रहा है कोई भी तेरी एपीआई है एक्सटर्नल एपीआई है फिर हैवी कंपटीशन है फिर यू हैव समथिंग फैन आउट टू मल्टीपल यूजर्स सब में अश्विन कुमार भाई सब में अश्विन कुमार समझ रहा है हम्म। ऐसा होता है हैंडलिंग फेलियर we have been job will be retried by another worker how do we know the work exactly well how do we check the queue to let know that they can travel out to Java significant टीना को मैंने मैसेज डाला था, फोन तो उठाया नहीं था इसने। लिख रही है आई एम नॉट विद माइक्रोसॉफ्ट एनी मोर, थैंक्स। you're spending a lot of अब इसे लिखता हूँ, वुड यू माइंड शेयरिंग वेयर यूर करंटली वर्किंग। job गार्बेज कलेक्शन पॉज हो कहाँ रहा है सिर्फ जावा वाले में होता है कहाँ होता है कहाँ कहाँ होता है ये क्या? गार्बेज कलेक्शन पॉज ऑन अ ब्रेक। अब इसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं भाई? अच्छा वही वाले यार इसको मैंने कॉल किया था भाई इसका ले ऑफ हो रखा था मेरे ख्याल से तो अच्छा। मैंने बताया तो था कि मैंने कॉल लगाया था उसने बोला कि वही ब्रेक में मतलब ले ऑफ हो गया मैं रिक्रूटर भी ले ऑफ होते हैं क्या? नहीं मैंने स्पेकुलेट किया था कि भाई शायद गार्बेज कलेक्शन पॉज हैपन इनसाइड द रन टाइम वीएम एंड इट पॉजेस योर एप्लीकेशन थ्रेड नॉट द क्या होल लिखूं ओवर इसे पर मैं अब? ऑन अ ब्रेक के बाद तो क्या ही लिख सकता है कोई। थैंक यू अरे थैंक यू एंजॉयिंग का योर है ब्रेक नेम फक है। अरे भाई इतनी बातें थोड़ी करनी है। सेड अबे अच्छा सबके अंदर होता है बे जावा के अंदर तेरा जेवीएम में होता है गो के अंदर तेरा गो रन टाइम में होता है पाइथन के अंदर तेरा सी पाइथन इंटरप्रेटर में होता है सी शार्प के अंदर डॉट नेट सीएलआर में होता है क्योंकि कितना पैसा कमा लिया कि ब्रेक पे चले गए। डाल दिया होगा भाई रिक्रूटर लोगों को कौन निकालता है? क्यों नहीं निकाल देंगे भाई अच्छा रिक्रूट नहीं करे तुम अरे वो सब हो जाता है भाई, ये रिक्रूट तो कर ही लेंगे ना। इनको क्या दिक्कत है? इनको करना क्या है, एक बार नहीं हो रहा कोई तो 10 रेज्यूमे और हायर कर लो, ले भाई निकाल ली। ऐसा नहीं जल्दी होता से ना ढूंढ। कि देखो पैनल का टाइम भी तो होता है ना
एक्सपेंसिव होता चलता है वो। अरे तो क्या? समझ नहीं रहा ना, 10 कहेंगे, पहला फिल्टर लगाएंगे आईआईटी। कहेंगे इसमें से निकालते हैं आईआईटी, और पहले काम करा हो इधर बड़ी इन सब में, फैंग वैंग में, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना फिर कि निकल ही जाएगा। फिर हमारी जैसी बददुआ लगती है तभी निकाल देते हैं इन्हें। सेशन टाइम हैंडलिंग रेपिटेड फिलर, दिल को लगा भाई, डेड लेटर क्यों मारो इस पे? What happened if a job keep failing? Maybe there's a bug in it. Bad input data that crashes the worker. That handling failing job get tried भाई मैंने forever. यही देखा है, इधर उधर हो जाते हैं लोग तभी रिप्लाई देते हैं। रिपलिंग वाली को करा, उसका फ़ोन फिर वही अजीब अजीब उस पे चला जाता है। फिर कॉल करा, वो मैसेज करा तो कह रही है मैंने तो रिपलिंग छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ पे है गूगल। मैंने पूछा कहाँ है, उसका जवाब नहीं दिया। गूगल वाला तो अलग बंदा था। Each one tries to put it. सोचे Intel। ये जो तेरा आता है पॉइजन वाले तो मैसेज आते हैं, पॉइजन मैसेज आते हैं तेरे क्यू में, जो तेरा वर्कर को कैसे तैसे करते हैं, वो वैलिडेट नहीं किया जा सकता क्या कि भाई पहले सर्वर पे वैलिडेट कर दो फिर तुम क्यू में डालो सही है नहीं है, या फिर कोई डेटा में ही कुछ ऐसा गड़बड़ी है, या फिर डेटा सही है, मान लो कोई ऐसा ऐसा फॉर्मेट है जो हमारा सर्वर नहीं संभाल पा रहा हो तो क्रैश कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है भाई अच्छा कुछ ना कुछ तो रीजन हो ही सकता है, डीएल क्यू तो जानना ही पड़ेगा। आफ्टर अ जॉब फेल अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम टिपिकली 3 5 यू मूव इट टू अ सेपरेट क्यू पॉइजन इंस्टेड ऑफ। मैसेज क्या था? तेरा पॉइजन मैसेज ये है वो जो तेरा होता था ना, सर्वर डाउन कर देता है। एप्लीकेशन जो प्रोसेस नहीं कर पाती। हाँ जो तेरा सर्वर डाउन कर दे या फिर तेरा प्रोसेस नहीं हो पा रहा, बार बार तू डाल रहा ट्राई कर रहा नहीं हो पा रहा। तो तो क्या डीएल क्यू में फेंको और क्या करेगा? बस फिर तुझे क्या करना हो? डीएल क्यू में फेंकना है। Yes, let a तो है progressing फिर, job while letting a healthy। और क्या हैंडल करना चाह रहे? नहीं मैं सोच रहा था उसने और वैलिडेशन की वैलिडेट कर लेते हैं, लेकिन अगर वैलिडेट कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग तो ऑलरेडी हो रही है। एसक्यूएस में ऑलरेडी होती है, RabbitMQ में यू सेट अप अ डेलेटर एक्सचेंज, ठीक है, डेलेटर एक्सचेंज। The case monitoring your DLQ, since growing deleter queue usually signs a bug in your system that needs immediate action. Of course, preventing duplicate worker. Oh. The interview continues. A user gets impatient and clicks generate report 3 times. Now you have 3 identical jobs in the queue. How do you prevent doing the same work multiple times? A user get impatient and click generate report 3 times. Now you have the identical report. ये तो हम सर्वर लेवल पे कर लेंगे यार, नीचे पे आने की जरूरत नहीं है। Without duplication, you waste resource processing identical job. Worse, you might send 3 emails to the same user or charge 3 times. Side effect compound when job aren't independent. The solution is dependency. When accepting a job require a unique identification that represent the operation. For user initiation action combined with user ID plus action plus timestamp likely around it to the duration you want to prevent duplication. For system generated jobs, use deterministic ID based on the input data before starting work. Check if the job list with this already exists. If it does, return the existing job ID. हाँ, of course भाई।
You'll also want to make the work itself, uh, the job feel halfway through and you get it right. It should be safe to run again. This meant main checking if an email was already sent or if it is a back pressure. That's what I'm saying. It's a Black Friday and suddenly you are getting 10x more job than usually. Your work can't keep up. The queue grows to millions of pending jobs. What do you do? Job fast enough and queue grow unbounded. Memory uses exploded. Job with time is just 2 hours. New job get rejected because the queue is full. User get frustrated waiting. भाई क्यों पीछे क्यों लगा दो भाई दो चार ठो The solution is called back pressure. It slows down job acceptance when a worker overwhelmed. You can set the queue depth limit and reject new job when the queue is too deep and return our system ready response immediately rather than accepting work you can't handle. You should also auto skill worker based on the queue depth. If the queue group beyond a threshold spin up more worker when it's in scale down. CloudWatch auto scaling group. Set for database. The key matter is queue depth on not CPU. By the time CPU is high, your queue is already met. Enter the software PDF and the your just same key. What problem does it? How many job? How many job? User request here from the report. Let's hour behind someone. Okay, utilize then become uneven. In some organizations, hundreds of quick jobs while other are stuck on a single job. Auto scaling become a huge pain when you can't predict how long the job will take. Of course, the solution is to separate queues by job type or expected duration. Quick reports go to a fast queue and many workers obviously go to a slow queue. That's the quick prevent the let you tune age request independently. Alternatively, you can break large job into small chunks. Let fast and move. Yeah, just finally, what if gathering a report requires three step first data generate PDF then email? How do you handle job? Not proper application. You end up with spaghetti. Spaghetti code, bhai, spaghetti.
One make no understand and what motivation to fails. To do retry. Etc. Or start over. Monitoring which is step fail and simple chain. Each worker queue left include the full content. Each job source to can provide a stipulated PDF previous to be a context. Okay. For complex workflow while branching or parallel setup, use workflow application like AWS step function and Airflow. This tool let you define worker as code files per step, prevent visibility and provide visibility into where data validation operation request all GPU instance no IO high request वाली ठीक है यस है तो async worker initial check calling SNL API with rate limit no yes specify not valid ठीक है इसमें डाल दिया ये कहाँ गया लो हम्म क्या कर रहा है क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ, 4 बज गए हैं 1 घंटे कॉल करते हैं जाता हूँ रनिंग करके आता हूँ भाई कल भी जिम नहीं गया था कल भी कुछ नहीं करा A company is hosting a web application and doing a single student user upload documents in EBS volume for better scalability. Company duplicated architecture and created second EC2 with EBS volume in Eleven application load balancer after completing user reported that each time shared with CN but never recovered what should be. Copy. कौन सा हो सकता है कॉपी द डेटा सो दैट कॉपी तो सी ईवीएस हटाओ भाई क्वेश्चन 6
हम्म, बी बी बेटे बी स्नोबॉल। पता है एडब्ल्यूएस तेरे घर पे आके तेरा डेटा लेके जाएगा, तेरा डेटा बहुत ज्यादा है। क्या? तू बोल मेरा डेटा है 100 टीबी 150 टीबी, हाँ। और मैं एडब्ल्यूएस पे डाल नहीं सकता, नेटवर्क बैंडविड्थ और उस सब का इशू है। तो अगर तेरा कम लेवल का है तो वो तेरे को पेन ड्राइव इसी दे देता है एक। वो कहता है इसमें डाल के दे, हमें मेल कर दे। और थोड़ा बड़ा होता है तो ट्रक आता है भाई पूरा। अच्छा। ये देख, स्नोबॉल स्नोफ्लेक स्नो मोबिल यार। स्नो फैमिली अरे देख ले। यार, ये तो बढ़िया है भाई, ये तो बढ़िया है कि लाओ बेटा तो डेटा लेके जाते हैं। अरे बाप ये देख, रे ये स्नोबॉल यार। तेरी पेन ड्राइव से आती है, स्नो कोन तेरा बड़ा थोड़ा, और स्नो मोबिल आती है। ये ला बेटा डेटा, ला डेटा। इतना कितना डेटा है तेरे तेरे पास? घर पे लेके जाएंगे। ये देख, अरे 8 टीबी यार। के लिए स्नो कोन, 80 टीबी के लिए स्नो एज, 100 पेटाबाइट्स के आसपास है तो अबे मोबिल। ये किसी घर में जाएगा, उसके घर पे इतना बड़ा खुद हो। अनरियल सा फील आ रहा कंपनीज है, के पता लिए है? होता है पूरा, बड़े बड़े। अनरियल सा थोड़ा फील हो जैसे रहा है ये। अबे तेरी कंपनी है पूरी, वो तेरे ऑन प्रेमिस खुद का सर्वर मैनेज करके सारा डेटा रखती थी, वैसा होगा ना। वो बहुत बड़ी हो गई है, उसे एडब्ल्यूएस पे जाना है। 100 पेटाबाइट डेटा हो गया है, ये ला कॉपी कर। ऐसे ही है भाई, कुछ भी चलता। A company has application that ingest incoming message, फिर कंज्यूम हो जाते हैं। These number of message increases to 1 lakh each second. Decouple to increase scalability. Persist the message. Deploy ingestion application in auto scaling group. Write message to middle indices. A. D. Publish the message. अच्छा, अपने आप कर देता है ओ। ओ भाई। Hmm. Nice. बता भाई, a company is migrating to a distributed application to AWS. Application serves variable workload. इतना लंबा पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पता है? Legacy platform consists of a primary server that coordinates join across multiple computer nodes. The company wants to modernize its application, maximize resistance, scalability, अच्छा, resiliency and scalability. Hmm.
क्या होगा, क्या लगता है? सी तो नहीं होगा। बी। ए। बी। हम्म। बाकी पेज नहीं दिखाता भाई, ये देख रहा है? पैसे दे, पैसे दे उसको। जो $80। घर जाएंगे इसमें। $100 का तो टेस्ट है। नहीं, $200 का है टेस्ट तो। पर ये होता है कि इन्होंने जो 100 पेज है ना, तुमने अगर ये 100 पेज पूरे देख लिए तो तुम्हारा वो हो जाएगा, क्लियर होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब ये पेपर में आया हुआ है और बहुत लाइकली चांस है तेरे पेपर में भी आ जाए। क्योंकि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन ही होते हैं जो नए होते हैं, तो उनमें तो तू कुछ नहीं कर ही सकता है, बाकी ये पुराने वाले तो पता ही है, हो जाएगी। ओ, पर इसके लिए पैसे कौन खर्च करे? डोजो डोजो। हमने ऑफिस वालों को कहा था मैंने कि यार तुम इस इंस्ट्रक्टर को बुला के तुमने 5 दिन का सेशन करा लिया, इससे अच्छा हम इसका सब्सक्रिप्शन दे देते 3 महीने का क्वेश्चनों का। हम ये पढ़ के थोड़ा जल्दी आराम से करते थे टेस्ट, ये ज़्यादा आसान होता। कि पढ़ाई तो हम खुद कर ही लेते कहीं से, मॉक क्वेश्चन की दिक्कत थी ना सारी। लार्ज जॉब लॉप्स। मैं कहा ये तो वही चीज़ें बता के जो मैंने यूट्यूब से खुद पढ़ी थी, फायदा क्या रहा? आपने इसे पैसे भी दिए आने के। करते हैं भाई, इसका भी सेट करते हैं मार्च में, टेस्ट सेट। पता है क्लॉट डाउन हो रखा है। और टाउन खरीद ले फिर। अब क्लॉट वो
रिक्वेस्ट नहीं जा रही है उस पे लोगों प्लॉट की। मुझे लगा प्लॉट सुनाई पड़ा। लॉर्ड भाई। कह रहे जहाँ पे अटैक करा ये रशिया की, इनकी ईरान 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 की और इसकी हाँ यूएस की, सर्वर था, वही वहाँ सर्वर था। एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर था। ले बेटा, जीजी बॉयज। एडब्ल्यूएस का सेंटर उड़ गया, वहाँ पे क्लाउड चलता था। तो ये जंग किस लिए हो रही है? क्योंकि ये कुछ पीडो ये नहीं मान पा रहे कि भाई उन्होंने कुछ किया किसी आइलैंड में जाके। अरे न्यूज़ क्या है भाई, न्यूज़ क्या, न्यूज़ क्या, न्यूज़ है क्या? याहू। What the fuck? क्या होगा, क्या हो गया? याहू क्यों आ गया सर्च इंजन में? वन डे वन पाँच। रशिया वॉन ईरान कुड ईरान के पास न्यूक्लियर तो नहीं था। रशिया वॉन ईरान और कुड एस्पर न्यूक्लियर वेपन रेस इन बॉर्डर मिडल ईस्ट बेटे। बढ़िया तो ये सीन है भाई। करण औजला आया था यार कॉन्सर्ट में। हाँ इसके सारे नए नए गाने तो सब बंदे बढ़िया बढ़िया गा रहे हैं। हाँ। कह रहे जब ये फेमस होने से थोड़ा पहले के गाने उसने बजाए, ये हमारा कह रहे अब क्या हुआ औजला पगलू को। अब क्यों है नहीं कौन? गा पा रहे? तेरा नाजुला है कौन से? ये यार वो है। अरे ये गाने गा देता है यार। गाने का, गाना का नाम बताए का? मुझे भी नहीं याद ना। नेवर माइंड। तौबा तौबा, वाइट ब्राउन, सॉफ्टली, अच्छा। नथिंग लास्ट, वो तेरा तो अच्छा। गॉड डैम, ऑन टॉप। मतलब गाने तूने सुने होंगे पक्का, नाम नहीं पता होंगे ये नाम गाने का। क्या है ये? सिक्स चल जा। यूएस सर्वर मेंबर किल्ड इन स्टार्ट ऑफ द वॉर। अच्छा। व्हाट द फक? क्या? मुझसे क्या बज गया मेरे कानों में? ऐसा सुना तो है। सुना है ना ये? सुना है। तो यही है, इसका ही है। तो नए नए सुने हैं लोगों ने, अब कह रहे अब सुना पुराने गाने जब बजा रहे हैं अपने। तुम तो इसके फैन थे। कुछ ना हुए, फैन आउट हुए हैं क्यों लगा के। फैन इन करो भाई। व्यूज तो है भाई हर गाने पे। कौन सा सॉन्ग था? ये तो बजाया था एक, कोई नया नया आया था। हाँ, ये वाला चला है ना इसका बहुत। गाने अरे सुना होगा ये भी तुमने। मुझे सौ सौ तो लग रहा है। अरे सुना ही सुना है होगा भाई, भाई। सुना है। ऐसे हो ही नहीं सकता ना सुना हो। सुना है भाई। ये तो सुना ही है भाई, ये तो सुना ही है। वही तो कह रहा हूँ। अरे तो इसके फेमस तो हो जाते हैं। अरे रेडियो पे एक बंदे की पोस्ट पढ़ा था भाई, उसने पीडीएफ पे बोला कि पीडीएफ बना बना के उसने पैसे कमा लिए, काफी पैसे इनका, बोला गजब भाई। पीडीएफ बना बना के? हम्म। टेम्पलेट टेम्पलेट बना के बेचता था वो।
और सही है अबे यार तो तो। पीडीएफ छोड़ भाई, जीपीटी नया आया था, उसने एक बंदे ने कुछ नहीं करा। जीपीटी में यूट्यूबरों को वो देता था अपनी नई वीडियो का, उसकी साइट बना दी उसने और लोग उसको आके पैसा दे रहे थे। अरे यार और जब नया नया आया था जीपीटी, क्योंकि तब यूज केस तो पता नहीं था लोगों को। उसने कहा ये यूट्यूबरों को नई वीडियो के सजेशन दूं कि कुछ नहीं करना था, ये बताना था बस कि मैं ये यूट्यूबर हूँ, इस एरिया का हूँ, ये गेमिंग खेलता हूँ। ठीक है भाई। उसकी बढ़िया चल गई। ब्लॉग में कितना है 10 मिनट ठीक है। रील आई है, पहले इंडिया घूम लेते हो इंटरनेशनल, बाद में कर लूंगी। बाद में बाद में वॉर शुरू हो जाती है, तो बाद में एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। वो और कैसे के कैसी भाई। मतलब इसी टाइम पे क्यों हो रहा है ये सब कुछ जब हमारा काम करने बारी आई तो बताओ। इकोनॉमी के बावजूद भाई। और हमारे काम करने की बारी आई तो हजे आग लगी पड़ी है। बताओ। मैं बोलता हूँ वही टाइम ठीक था जब लोग डीएसए पढ़ते थे बुक से, और कोई तरीका नहीं था पढ़ने का, वही टाइम ठीक था। दुनिया जाने रिसोर्स आ गया है जो हर इंसान पढ़ ले रहा है, हर इंसान कर ले रहा है सारा बार इतना हाई हो गया यार, टफ सिचुएशन हुई थी क्या। Instead of shoving gigabytes through your server, this pattern use pre-signed URL to client। अब ये वैसे पढ़ा तो पढ़ लेते हैं, ठीक है कितना है। एक ये है ना, राइट रीड और स्किल पढ़ लेंगे रीड। हाँ इसको खत्म ही करते हैं, जितना ये रीड वाले ब्लॉग्स है उसका क्वेश्चन भी चलते हैं, कल से क्वेश्चन ही चालू करेंगे। आँख की आँख, रोज एक क्वेश्चन एटलीस्ट।
जितना बड़ा ये नहीं है, इससे बड़ा, इससे छोटा तो क्वेश्चन होता है। Why blob storage? Database are great at structured data with complex queries, but terrible with large binary object. 100 MB file stored as a blob kill query performance, backup time, and replication. Object stored like S3. Object stored like S3, but for the unlimited capacity. 98% 11 nines durability. बाप रे 11 9 11 9 यानी साल में कितनी बार फटेगा ये एंड मैक्स? कितने घंटे? क्या? अगर 11 नाइन्स हैं, मतलब 99.999 11 नाइन है, तो एक साल में कितनी देर के लिए कितना डाउन टाइम होगा इसका? व्हाट डू थिंक? मिनट्स में होगा, सेकंड्स में होगा? यार इस पे बात हुई थी हमारी 99 पे हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, पर मैं भूल गया नंबर इसी पढ़ाई के टाइम। घंटे भर पे ले आता ना ये पूरा पूरा, कि एक साल में इससे ज्यादा डाउन नहीं हुआ मुझे, 1 घंटे या फिर ऐसा कुछ था। देख लेते देख लेते हैं भाई। 11/9 हो गया 0.3 मिली सेकेंड पर ईयर। हैं। कहाँ है बेंच? वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा भाई साहब, ये तो डाउन टाउन है ही नहीं। हाँ, जीरो ही है। 3/9 का मतलब होता है 5 मिनट का। 4/9 का 0.315 मिनट। 52 मिनट का। ये क्या? 3 9 का 8 घंटे, साढ़े 5 9 का मिनट, भाई 11 9 का, भाई साहब, ये तो अभी भी एक्चुअली लाइव कर ऑलमोस्ट। रहा है क्या? हाँ, मैं लाइव हूँ भाई, मैं लाइव हूँ। तो अब गाना बजाया, वो कुछ आएगा नहीं उस पे? अरे आ जाने, मुझे क्या, सब जिससे पैसे आ रहे हैं, कौन सा मेरा मेन चैनल है ये? बंद कर दो पैंच। सारा बंद बंद कर कर दो, दो। मुझे क्या, आईडी भी तेरी है। कोई मेरे को आएगा, आपका ये हो गया, मैं कहा ठीक है। बात नहीं, अच्छी बात है। यूडेमी पे होगा ना, यूडेमी पे देखता हूँ भाई। क्वेश्चन होंगे इसके, वहीं से करता हूँ। योर ऑन अ रोल। जोक लिख रहा है भाई। वी आर फोर्सिंग एप्लीकेशन सर्वर टू बी डम पाइप्स। They add no value to the transfer, just latency and cost. Cloud provider already have global infrastructure, resume capability, and massive bandwidth. Yet we insert our limited application server as middleman, creating a bottleneck where none needs to exist. Damn, that was a joke. इस पे कोई व्यूज भी आ रहा है क्या? Let me check. For example, if your application crashes. एक की प्रैक्टिस टेस्ट टेस्ट में तो, अरे भाई मैं तो ज्यादा चाहिए थे।
टू प्रैक्टिस टेस्ट। ये ठीक है, प्रैक्टिस क्विज है, ठीक है, ये वाला लिख लेंगे। आया मैं थोड़ी देर में, रुक। I'll neutralize the target myself. Leon Kennedy. We finally meet.
server. So you and temporary store links to don't drag directly to the store. Your application servers will shift from data to access control. Validate the request generation credential and get out the way. Whether you are using AWS, S3, Google Cloud, storage or Azure Blob, they all support temporary URLs that grant time. In server as ticket book, a concert venue. When someone shows up with a valid ticket, you don't personally escort them to their seat. You verify their identity, hand them wristband, and let them find their own way. Same thing here. We validate authorization once, then let the client interact with the storage directly. Simple and direct approach. When a client wants to upload a file instead of receiving the entire file, the server just receive a request for upload permission. We validate the user, check quotas, then generate a temporary upload URL. This URL and अबे अबे यार लियोन को तो गुजो बना दिया अबे लियोन को तो गुजो बना दिया अबे लियोन को तो गुजो बना दिया उसने Alright guys, welcome to the episode 2 of RE9 जिसमें अभी थोड़ा सा रिकैप दूं तो हुआ ये है कि ग्रेस को विक्टर ने किडनैप कर लिया है और अब इस एपिसोड में एज अ लियोन हम जाएंगे विक्टर को चेस करने। लेट्स सी क्या होता है। भाई पीछा कर उसका, भाई पीछा कर उसका। भाई सोचो कंधे उठा के ले जा रहा है और आजू बाजू लोग देख रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा। पीछा कर भाई उसका। He noticed me. He noticed me. How? What's going on? कोई तो आया, कोई तो रिस्पांसिबल सिटीजन। Oh, she's fine. I'm just taking her home. ओए they're going to become zombie or what? Leon, what's your sit rep? I'm going after Victor. सब zombie में कन्वर्ट होने वाले हैं।
हाँ ये एक zombie. Is he a zombie? No, he is not. Whoa, 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 whoa. Hey, what the hell, lady? Help me! You okay? What are you doing? Ah! ये तो गंदा रोमांस हो गया. ये तो गंदा रोमांस हो गया. भाई रोमांस थोड़ा ज्यादा हो गया ओए. ओह हो.
फ्यूज चाहिए भाई, वी डोंट हैव फ्यूज। ऑफ कोर्स भाई डेड है यार, बाजू में फ्यूज है ना, दिख नहीं रहा, फ्यूज लगा नहीं है इसके अंदर, फ्यूज लाना पड़ेगा हमें जाके। ना ना रेस्क्यू प्रोटोकॉल फॉर व्हाट? अरे नहीं 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 अबे यार बत्ती बंद कर। ओ सेव का है टाइपराइटर, ओए लाडले सेव का भाई, ये भाई पहला सेव, लेट्स गो। ठीक है ना, ला भाई फ्यूज दे तू मुझे। अबे इसको खोलने के लिए कुछ लाना पड़ेगा, अबे यार हट। शैडो घोस्ट भाई, हैव यू एवर सीन शैडो घोस्ट हाइडिंग इन द डार्क? अबे यार ये हॉरर स्टोरी पढ़ा रहा है। हैव यू सीन द शैडो घोस्ट स्टेइंग इन द लाइट? हाँ, have you seen the shadow ghost because she's been watching you? अबे यार, she's been watching me. Stay in the light. Fuck. We are fucking doomed. कौन है यहाँ पे? मुझे लगा था भाई शैडो घोस्ट तूने बताया नहीं, तू गेम में है। मेरा गेम में थोड़ा सा कैमियो कर दिया इन्होंने। ओए घंटा कौन लटका रखा है यहाँ पे? अरे घंटा नहीं था, घंटा नहीं था, लैम्प रखा है। क्या है इसमें? टू स्टार, आई हैव मूव्ड सम आइटम आउट ऑफ द क्लोजेट, द स्क्रू ड्राइवर इज नाउ इन द टूल बॉक्स इन द नर्स स्टेशन। अबे यार नर्स स्टेशन तक जाना पड़ेगा भाई। इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि स्क्रू ड्राइवर हमने उठाए कहाँ रखा है, लिटरली लिखा है स्क्रू ड्राइवर उठाए कहाँ रखा है, बताओ। यही है भाई। ओए हट के दूर हट जा। मरा है, मरा है, मरा है, मरा है। टॉर्च ऑफ करूंगा दिखाई नहीं पड़ेगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मुझे लगा गन में नहीं है, जीजी हो गया अपना। क्या पल्स चेक करी? ऑलरेडी मरा पड़ा है, क्या पल्स चेक कर रही है? व्हाट आर यू चेकिंग ओवर देयर? दूर हट जा। अबे what the fuck भाई। भाग 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 कहाँ भाग 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 भाई भाग भाग। ये पटाई करेगी ओए। चल चल जल्दी आ जा। अबे अल्लाह, नहीं 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 नहीं, जाने 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 दो मुझे, जाने जाने दे। ओए फक, वी आर डूम्ड, वी आर डूम्ड, वी आर डूम्ड, वी आर डूम्ड। बत्ती बत्ती लाइट 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 लाइट। ओए 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 पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। क्या कर रहा है? मुझे अपने डाइट टैब पे अपनी वीडियो चला दी थी मैंने। अरे भाई अभी भी पढ़ाई छोड़ के ये सब। नहीं अभी रिलीज किया ना, तो उसमें चला तो वॉच टाइम आ जाएगा, हाँ 20 मिनट। क्या सीडीएन से ब्लॉग लॉक करके डाउन करवा रहा है भाई, सीडीएन से। क्या डाउनलोड हो रहा है? सीडीएन से, अरे नहीं देख, ब्राउज स्टोरेज पड़ रहा था उसमें, सीडीएन से कनेक्ट करके ब्राउज स्टोरेज को वहां डाउनलोड कर रहा है। बड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन बेटर परफॉर्मेंस देता है।
आज तो मैंने मार्केट ही नहीं देखी यार, क्या चल रहा था। है उतनी ही है। अमेरिका और इजराइल ने 160 ईरान की प्राइमरी स्कूल जाने वाली बच्चियों को मिसाइल से उड़ा दिया। पर खच्चे उड़ा दिए 160 मासूम बच्चियों के जो प्राइमरी स्कूल जाती थी। ये कबर की फोटो आपके सामने है। मतलब जो लोग अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करते हैं ना, वो रिप्रेसिव रिजीम था, ये था, वो था। अरे भाई, वोट तो डालते थे कम से कम ईरान के लोग। ईरान के अंदर सऊदी अरेबिया में तो नहीं डालते, पर वो तो बहुत ही अच्छा लाई है यूएस का। वहां तो नहीं कोई बोलता कि वहां पर हमला करके इसके रिजीम को टॉपल कर दो, क्योंकि विमेन्स राइट्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही चलती है। अभी जुम्मा जुम्मा कितने साल पुरानी बात है, जब विमेन को सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। पर नहीं, वहां पर ये आर्गुमेंट अप्लाई नहीं होते। इनफैक्ट 2017 में ट्रम्प जाकर सऊदी अरेबिया में क्या बोल कर आया कि हम अपना वे ऑफ लिविंग आप पे इम्पोज नहीं करेंगे, हम आपको लेक्चर करने नहीं आए कि आप कैसे रहो, क्या हो, कैसे जियो, ये सब हम आपको बताने नहीं आए। आप अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लो, वहां पर इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों के साथ मिलकर अमेरिका ने, जो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव सरकार थी विमेन को लेकर के, ये आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो चाहे, उसको इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रो सोवियत अलाइंड थी। ये मतलब बेसिक जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते लोग, अपना इमोशनल टॉयलेट करने पहले आ जाते हैं। अरे भाई, ईरान में प्रो अमेरिकन सरकार हुआ करती थी, 1953 में कू कर दिया था वहां पर, आपकी इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलकर, तो वहां पर अपने प्रो सरकार बिठा दी थी। उसके बाद 1979 तक आते आते शिया इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, और उसके बाद वो एंटी अमेरिकन हो गए कि भाई हम अपने इंटरेस्ट को केटर करेंगे। तब से अमेरिका वहां पर रिजीम चेंज करना चाह रहा है, कोई ना कोई सैंक्शन लगाते रहता है। तो भैया वो रिजीम को जब आप रिप्रेसिव बोलते हो, आप सैंक्शंस को क्यों नहीं देखते बैकग्राउंड में? जैसे ट्रम्प जब अपनी पहली टर्म में आया था, उसने मैक्सिमम प्रेशर नाम से कैंपेन चलाया कि भाई सैंक्शन लगा के ईरान की इकोनॉमी की ऐसी तैसी मार दो, चीखें निकलवा दो, ताकि वहां के लोग ही ओवरटर्न कर दे रिजीम को। 2 सालों के अंदर उनकी इकोनॉमी 12% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई, गरीबी बढ़ गई 11% से। आपको अंदाजा है इन फिगर्स का क्या मतलब होता है? 27% ईरानी लोग 2017 में डेली का 2100 किलो कैलोरी की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते थे। वो 2 सालों में बढ़कर फिगर हो गई 27% से 40%। 40% ईरानी लोग 2100 किलो कैलोरी भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। 260 से इनकी मिनिमम वेज $260 से घट के हो गई $70 अ मंथ। जस्ट इमेजिन दैट। जब ऐसी चीखें आप मरवाओगे तो अंदर अनरेस्ट तो हो गई, उसको फिर क्रश किया जाएगा। ऐसी दिसंबर 28 में पिछले साल वही सैंक्शंस इन द बैकग्राउंड, वहां पर प्रोटेस्ट हुई इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को लेकर के। मैं नहीं कह रहा अमेरिका ने पैसे दिए प्रोटेस्ट कराने के, पर उन्होंने सिचुएशन क्रिएट करी ताकि ईरानियन इकोनॉमी चीखे मारे, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो, जिसकी वजह से रिप्रेशन हो, वगैरह वगैरह। खमेनी रजीम ने एस्टिमेटेड है करीब 3000 से 30,000 के बीच में लोग मार दिए, मेजर क्राइम। लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो सिचुएशंस किसने क्रिएट की, उसकी क्यों नहीं बात करते आप? अब जैसे नेतन्याहू का एग्जांपल लो, उसके ऊपर तो कोई सैंक्शन नहीं लगाई अमेरिका ने, ना इसराइल के ऊपर लगाई। उसने 70,000 से ऊपर गाजा के लोग मार दिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके अगेंस्ट वारंट इशू करा, अरेस्ट वारंट फॉर बीइंग अ वॉर क्रिमिनल। आपको पता है अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे सैंक्शन लगा दी नेतन्याहू पे लगाने की जगह। तो भैया, जब आपको ये सब नहीं पता, अपनी जुबान मत खोला करो, क्योंकि एज द फेमस सेइंग गोस, बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट ऑफ एज अ फूल देन टू ओपन माउथ एंड रिमूव ऑल डाउट्स। तो फाइनली ईरान की महिलाओं को खमेनी के आतंक से बचाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने 160 ईरान की प्राइमरी स्कूल जाने वाली बच्चियों को मिसाइल से उड़ा दिया। पर खच्चे उड़ा दिए 160 मासूम बच्चियों के जो प्राइमरी स्कूल जाती थी। ये कबर की फोटो आपके सामने है। मतलब जो लोग अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करते हैं ना, था, ये था, वो था। अरे भाई, वोट तो डालते थे कम से कम ईरान के लोग, ईरान के सऊदी अरेबिया, पर वो तो बहुत चेकिंग हम वेब ब्राउजर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, कि कर सकते हैं? क्या? जैसे हम कुछ बड़ी फाइल है जिसको हम ब्राउज स्टोरेज पे डाल रहे हैं, ठीक है, 10 GB 20 GB फाइल, ठीक। अब उसको जो चंकिंग करना, जैसे तेरा मोबाइल एप्लीकेशन होता है, चंकिंग कर देता है तेरे फोन में ही, क्योंकि उसका एप्लीकेशन है तेरे पास। माने तू यही अगर वेब ब्राउजर यूज कर रहा है, वहां से अपलोड कर रहा है, तो चंकिंग होगी कि डायरेक्ट पूरा जाएगा? चेकिंग क्या होता है? चंकिंग तेरा मतलब 10 GB फाइल है, उसको 5-5 चंक MB। कह रहा है? अरे तुझे क्या समझ चेक पड़ा? समझ में, चेकिंग चेकिंग बोल रहा है भाई चंकिंग तू। बोला भाई, चंकिंग बोला भाई। नहीं बोला। एनीवेज, हाँ तो बता, व्हाट डू यू थिंक? रिप्ले देख ले जाके। नहीं बता तो। क्या? जो मैंने बोला कि देख, जो तेरे फोन में एप्लीकेशन होता है वो तेरा चंक अच्छे से बना के भेज देता है तेरा क्लाउड स्टोरेज में, तो ठीक है, वहाँ जाता है।
अब तेरा यही सेम चीज, तेरा ब्राउजर है, ब्राउजर तेरा चंक भेज रहा है तेरा ब्लॉग पे, तो वो कैसे भेजेगा? वो चंक करेगा कि पूरा फाइल भेजेगा? गूगल कर ले भाई। अ, होता तो है, चंक चंक में होता नहीं है। तेरा कनेक्शन रहना चाहिए पूरा, वरना कनेक्शन हट गया तो चंक में भेजता तो है। क्या पता लगा? पता लगा तेरा इम्प्लीमेंटेशन है, तो इम्प्लीमेंट कर रहा था चंकिंग तेरे फ्रंट एंड की कोड पे। मल्टी पार्ट अपलोड वाला, ब्लॉग्स बना के स्लाइस करके छोटे छोटे ब्लॉग में चंक्स। स्लाइस करके, हाँ। हम्म। उसकी केस यूज करके कर सकते हैं। ब्राउज़र क्लाउड स्टिके कर देता है, तेरा कस्टम जेएस लॉगिन भी कर देता है। नॉर्मल ब्राउज़र है तो नहीं करेगा।